bigger package, so we had to zoom out our whole full view. तो गलत चीज़ के लिए गलत टूल यूज़ कर, कितना बेवकूफ़ हूँ. एंड प्लीज़ गाइज, इस पर हमारा महीने का कम से कम 20-25 हज़ार रुपये खर्चा हो रहा है कंटिन्यूसली. तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट, ताकि हमारे चैनल को थोड़ा बहुत मोनेटाइजेशन मिले एंड आई कैन लाइक कंटिन्यू बेटर एंड डू मोर, गिव यू बेटर व्यूज़. राइट नाउ जॉब के साथ साथ इसमें वो संभालना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. लाइक घर से बहुत डांट पड़ती है उस चीज़ के लिए कि पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे बताएं हम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग हेयर. वो तो पेरेंट्स नहीं समझते ना. सो लेट्स हैव फालतू टॉक्स. तो आई नो, बट प्लीज़ गाइस ऑलवेज थोड़ा सा देख के एंड गिव फीडबैक्स कि अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है, बोलो कि बहुत स्लो है, फास्ट है, जो भी है. मैं ट्राई करता रहता हूँ बीच बीच में थोड़ा बहुत, बट इन सबको ऑर्डर करना, सबको ऐसा, फिर उसका टाइप्स, और घर में जगह तक नहीं है अभी बची नहीं रखने की, कितना सारा हो गया अभी. सो अब सोचो, और कम से कम मेरा 4-5 लाख तो आराम से हो गया अभी तक, जब से मैंने स्टार्ट किया था अबाउट 1.5 years ago. तो और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए. कुछ कुछ मैं दे देता हूँ, कुछ कुछ ऐसे ही किसी फ्रेंड्स को बेच देता हूँ, टाइप्स वैसे वाले. एंड लेट्स फोकस ऑन दिस अ बिग बॉक्स. लेट मी सी क्या क्या है. ओके, सो आई दिस इज, आराम से खोलते हैं. सो आई हैव वन दिस हॉट व्हील्स, काफ़ी गंदा है. सुपर मारियो रन एंड स्टार वॉर्स, 3 चीज़ें हैं. सो किदो पेपर पैंट्स नहीं चाहिए. सो लेट मी साइड इट अप. तो मेरे पास 3 चीज़ें आई हैं. सो वन इज़ अ स्टार वॉर्स, वन इज़ अ सुपर मारियो रन, वन इज़ हॉट व्हील्स. सो दिस आर द 3. लेट्स स्टार्ट विथ हॉट व्हील्स. आई थिंक जूम आउट है. या लेट्स स्टार्ट विथ हॉट व्हील्स फर्स्ट. तो विल स्टार्ट विद इट. मैं प्राइसेस भूल चुका हूँ तो कैन नॉट. वन बिग कंप्लेन, बहुत गंदा है. लाइक एज यू कैन सी इट्स लुक्स वेरी डर्टी. आई थिंक इट्स इंडोनेशिया probably. द हॉट व्हील्स लुक्स, हॉट व्हील एक्शन, लाइक जस्ट लुक एट इट. आपको भी गंदा दिख रहा है ना. लाइक एंड सपोज इफ मैं किसी को गिफ्ट कर रहा हूँ, उसको इतना गंदा तो नहीं लगेगा. एंड कलेक्टर्स लोगों को तो ये बहुत बुरा लगेगा जो एक्चुअली कलेक्ट करते हैं. दिस इज़ मेटल, द कंपनी जो बारबी बनाती है. एंड इलेक्ट्रो स्लाइड किक 24, आई थिंक वो नहीं है इसमें. इस पर जस्ट कार्स हैं. तो मतलब नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ मतलब क्वालिटी वाइज, इन अ सेंस कि बहुत गंदा हो चुका है. लाइक दिस, सो एज अ गिफ्टिंग पीस ऑल्सो डज नॉट वर्क इन दैट वे. सो आई ट्राई टू थिंक कि मैं इसको ओपन करे तो करे किधर से. मतलब हर जगह से तो ऐसा ही है. तो आई ट्राई टू डू इट ऑन द साइड. तो इफ़ आई कैन open it up आराम से, because I want to keep the box intact, because उसका ही वैल्यू होता है जितना मैंने कलेक्टर वाला यूट्यूब वगैरह पे लाइक पीपल कलेक्ट. लेट्स सी all the Hot Wheels car. Let me just zoom it a little bit. So this is Hot Wheels. So 1 2 3 4 5, and it has that classic Hot Wheels वैसा वाला. So I'll zoom it in. Hot Wheels. So yeah, this is the first car I don't know like much about. So यहाँ पे ऐसा branding लगा हुआ है, Hot Wheels Electro silhouette made in Indonesia. It's correct, mostly like metal के toys Indonesia जितने मिले. And that body is rugged, like properly rugged body है. And this is something that can go on that wheels वाला thing. Size की बात करें, so this is like a 7 centimeter, about exactly 7.5 centimeter. Height की बात करें तो highest point पे it's like 1.5, otherwise it's like a 1 centimeter. And everything looks nice. Then does it opens up? No, it doesn't. Some of the Hot Wheels open up, and then this like a sports car. And I think, does it have a pullback? No, it's not a pullback. It's like a वैसा वाला like things. So this is how it looks. यहाँ पे से wheels are very nice, like Hot Wheel, you know the quality this things. So you can use it like a ramp वाले setup में जो आता है वैसे वाले पे.
सो दिस इज़ द फर्स्ट वन. दिस मतलब गंदा तो हो गया, बहुत धूल वूल जमा है, बट अंदर से ठीक ठाक है. दिस साइड से ऐसा दिखता है. तो इफ़ यू वांट हॉट व्हील्स, if you are a fan of Hot Wheels, you are looking for this collectible item, you can buy from Meesho ऐसा वाला. तो and that this is like a one seater. Let's go to the next. I don't know, this is like a NitroTailgater. So none of this is a pullback और वैसा वाला आप उसके लिए, this is like a track वाला thing, so you can like वैसा वाला track वाला thing you can try. तो height wise this has a height of some 7.5 centimeter, sorry, width, and 2 centimeter of height about. And this has a bigger front tire and a smaller bigger back tire, and the tire ka detailing is nice. This also does not open. Some of the things opened. I think this is not openable. This Hot Wheels look nice. This side, is side se aage piche, and then sorry. So this looks nice. So this is Tailgater Nitro, and ये ऐसा दिखता है. And one and only, and पीछे क्या लिखा है, NitroTailgater 2014 metal. So it's like, and if you're collecting, then it will make sense, like something very old collector items, batches में आए हैं, and you want to collect, so this makes sense. And these are the durability. And that this is another one. This is like a purple Hot Wheel. This is like a metal chassis. सब में metal है ना? हाँ, all of them has a metal chassis नीचे. No, this is a plastic chassis, but this one is a metal chassis. And this says Slide Kick 2018 made in Indonesia, F Hot Wheel FYB35, I think, if you can identify. Collectors के लिए makes sense. Wow. And it has this a side seat, see? So it opens up like this. Nice. So again, so इसको पुल करने से वो जाता है. Nice design, like, and everything is they are proper car design, and this is like a proper metal, like ये area, this is like a proper metal है, and that also looks good. Like this is very sturdy. I think it can take beatings also. वैसा zoo वाले पे भी चल सकता है. And let me take a caliper for measuring this, because it will do a good justice. 7.7 I think millimeter would be 74.7 millimeter, this one. And thickness की बात करते हैं. So total point पे like 1.4 13.7, so you can say 1.3 centimeter इतना millimeter का. And width base पे this is like 29 millimeter. So this is the height. I'll do for measuring also. And then let's come to the next. This is another Hot Wheel. This has a plastic base, and इसके नीचे लिखा हुआ है something Indonesia. This is 2010 का model, Twinduction. So looks nice, looks clean. And does anything opens up? No, I don't think so. But this looks Hot Wheels, like proper वैसा वाला. And ये proper Hot Wheels है, ऐसा नहीं कि ऐसा fake है. But because the price also उस हिसाब से. And this is a plastic body. This one has a metal, like proper metal body. I think this one has a plastic, and this one is another metal. ये वाला मेरे को सबसे heavy लगा. And this is also like proper वैसा वाला, मतलब ऐसा. So let me just give you the measurement. This one is like 67 millimeter. Height wise, this is about 18 millimeter, and width wise about 30 millimeter. And one thing I think I'm missing is I should also show you weight of this. So if I show you iska weight, so this is like a 30 grams. This one is also 30. Wow. Is it something that I don't know about? This is 27. This is 34. I'll tell you ना कि इसका metal chassis है. And I think सबका हमने weight कर लिया. तो let's keep back where it was belong. तो वहाँ पे रख दिया वापस. Let me just come back. I think मैंने एक नहीं किया है. I think this red वाले का मैंने अभी तक नहीं किया है. So yeah, sorry, this was green वाला. तो एक बार मैं ऐसे दिखा देता हूँ. So this is how it looks पूरा. वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, so sorry. तो and let's come back to this. This has a plastic chassis,
चैसी नहीं, मतलब नीचे का जो भी रहता है बेस प्लेट वगैरह, दिस इज़ 24 आवर्स। आई थिंक दिस इज़ लमांस होना चाहिए, क्योंकि 24 आवर्स इज़ लमांस ओनली, लीमांस लोमांस जो भी रहता है। 24 आवर्स लिखा है इस पर। हॉट व्हील्स मेटल मेड इन इंडोनेशिया 2010। सो इफ यूर एंड दिस इज़ द मॉडल नंबर, मे बी यू आर लुकिंग फॉर T9680। सो कलेक्टर्स को यूजली रहता है इस पर, और कुछ है नो मूवेबल पार्ट्स नहीं है, बट दिस इज़ मेटल एक्चुअली। मुझे लगा प्लास्टिक रहेगा, बट लाइक नॉट अ दैट लेवल ऑफ मेटल, लाइक दिस इज लाइक प्रॉपर ऐसा थिक मेटल बेस प्लेट वाला। सो लेट्स मेजर द हाइट। सो द फुल लेंथ इज 69.4 एंड इस साइड में अपन करें तो अबाउट 30 millimeters. So and then height is about 16 millimeter. So yeah, so ये था हमारा सारा का सारा this Hot Wheels. So about 5 of them collection, this Hot Wheels, and all from Meesho. Link in the description of all this. And so sorry, it's such a long video of this. Bye bye. Thank you.